नाउ हमने ये देख लिया कि आइडिया कैसे चूज किया जाए. नेक्स्ट इज किसको बेचोगे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज योर ऑडियंस बेस शुड बी लार्ज इनफ, not too small, not too huge, right? एक small sweet spot होना चाहिए, maybe somewhere around 10,000 to 20,000, 1 लाख के आसपास अगर लोग हैं जिनको तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस ज़रूरत है, जो which is not being currently satisfied by the market, you can play a pretty good game there. तुम recurring revenue के साथ यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ला सकते हो जिससे तुम रिकरिंगली पैसा कमा सकते हो, राइट. सेकंड, दे शुड बी एबल टू अफोर्ड योर सर्विस. मतलब अगर तुम एक बिजनेस से या एक यूजर से, ओके लेट्स स्पीक इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस. अगर तुम एक बिजनेस से महीने का $100 मांग रहे हो, योर प्रोडक्ट शुड बी सॉल्विंग एटलीस्ट मे बी $1,000 वर्थ ऑफ वर्क फॉर देम in order for them to pay you $100. Varna they won't pay you that much money, right? So your product should solve an issue and your customer should have the money to pay you. अगर तुम एक यूजर के पास जा रहे हो जो तुम्हें मंथली $20 दे रहा है, he will think in every way how can he get the same service for free or for even something cheaper. Especially if you're targeting an Indian audience, फिर तो और भी तुम्हें सेफ खेलना पड़ेगा, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम इंडियंस डू नॉट वांट पे, है ना. सो योर प्रोडक्ट हैज टू बी कंपेलिंग एनफ एंड अफोर्डेबल एनफ फॉर देम टू पे फॉर योर सर्विस, राइट. सो हाउ डू यू कैलकुलेट कि तुम्हें कितना चाहिए होगा, कैसे, दैट विल लुक इनटू द फर्दर. बट excluding your server costs, development, all those things, excluding everything, you'll have to make sure कि तुम्हारे पास इतना बड़ा टारगेट ऑडियंस हो, लार्ज इनफ टारगेट ऑडियंस that you will be able to sustain in the market, right? So when you're building a product, make sure you choose a product which has a large enough target audience. The people who will be your customers have the money to pay you, and it is affordable enough compared to your competitors. Even if you don't have a competitor, if it is affordable enough for them to purchase it, right? So तुमने एक टारगेट ऑडियंस चूज कर लिया. व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज MVP or minimum viable product. Okay, what do I mean by MVP or minimum viable product? देखो, अज्यूम करो तुम ये, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ये ट्वीट टू इमेज का अगर तुम्हें बनाना चाहते हो, you start with the core product. What is the core product? The core product is taking the URL of a tweet and converting it into a beautiful image. That is your core product. तुम्हारा पूरा फोकस उस कोर प्रोडक्ट को बिल्ड करने के ऊपर होना चाहिए, which you should not take a lot of time to build. Once the core thing has been built, you make it a bit beautiful and give it to your consumer as soon as possible. You don't spend a lot of time creating the perfect product, because तुम perfect product करने के चक्कर में कभी रिलीज ही नहीं करोगे. It will never enter the market, and what you idealize as perfect might not be what the market wants. तुम्हें जो सही लगता है और तुम्हें जो अच्छा लगता है might not be the same thing जो मार्केट को चाहिए. That is the first thing you need to understand, right? इसलिए build the core component first. अगर तुम एक चैटबॉट बिल्ड कर रहे हो, देन फोकस कंप्लीटली ऑन द चैट एस्पेक्ट, बिकॉज यूआई तो बाद में भी अच्छा बन जाएगा. एक बेसिक यूआई के साथ रियली गुड चैटबॉट जो कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ के, नॉलेज बेस को अच्छे से समझ के आउटपुट दे, पीपल विल ऑलवेज प्रिफर दैट देन समथिंग विच लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस बट हैज नो कंटेंट इन इट, जो अच्छा आउटपुट जनरेट नहीं करता. So focus on building the core component, the core concept, the core product. Then you can think of expanding it or making it more beautiful or maybe adding more features to it. Okay. Second, the faster you are able to get your product into the hands of your consumer,
आई कांट स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट. हाफ द टाइम तुम एक प्रोडक्ट बनाने के टाइम लगा देते हो, महीना, 2 महीना, 4 महीना, ठीक है. यू एंड अप स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन बिल्डिंग योर प्रोडक्ट, ऑन थिंकिंग कि दिस प्रोडक्ट विल बी सो गुड, बट फिर तुम्हें समझ में आता है दैट दिस इज नॉट वॉट योर द कंज्यूमर वांटेड. और जब तुम उन्हें देते हो, वो बोलते हैं मुझे ये वाला फीचर नहीं, दूसरा वाला फीचर चाहिए था, राइट. Then you have to again spend a lot of time reworking, changing, re-implementing things. So जितना जल्दी तुम्हारा कोर प्रोडक्ट तुम्हारे यूजर के हाथ में आएगा, उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा. थर्ड, डोंट फॉल इन लव विथ योर आइडिया. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एज यू बिल्डिंग योर फर्स्ट SaaS प्रोडक्ट, तुम्हें लगेगा दिस इज द बेस्ट आइडिया. Probability is it might be, it might not be the best idea. तुम प्रोडक्ट बिल्ड करोगे, यूजर्स के हाथ में दोगे, सी इज इट व्हाट दे एक्चुअली वांट. इफ यू फील कि नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग आउट, दिस इज नॉट गोना वर्क आउट, देन स्विच. use the learnings you took from the previous product, implement it into a new product. ठीक है, you'll not be starting from scratch when you'll be building a second product. So don't fall in love with the idea. That doesn't mean you don't experiment long enough. There is no hard and fast rule ki how long is a good time. It depends on how you market it, it depends on what you do, it depends on the product, it depends on the audience. इतने सारे variables होंगे, but that is where you have to figure out things. That is what will take time for you to figure out, right? That is why it's not easy, it's simple. Things are simple, it's never easy, right? So you have to experiment long enough to understand if this product will fit or not. But if the things won't work out, or if the product is not a good fit, leave, build something new. Okay, this is for this video.